आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। परमादरणीय राष्ट्रपति जी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, डीन फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, लेडीज एंड जेंटलमैन। माननीय राष्ट्रपति जी, ये आज हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य और महत्वपूर्ण दिन है, जिसके परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश सेवा के 2022 बैच के और एक अधिकारी 2019 बैच के 37 अफसरों के समक्ष आपके मार्गदर्शन का दिन है। माननीय राष्ट्रपति जी, भारतीय विदेश सेवा के ये अधिकारी भारत के विभिन्न प्रांतों से आते हैं। लगभग 17 प्रांत और यूनियन टेरिटरीज का एक प्रकार से नेतृत्व इनमें से ये लोग सामूहिक रूप से करते हैं। ये अपनी ट्रेनिंग समाप्त होने के उपरांत अभी G20 के साथ एक तो अटैच्ड है और दूसरा विभिन्न डिविजन्स में, विदेश मंत्रालय के विभिन्न डिविजन्स में भी काम करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जो भी पाठ्यक्रम विदेश नीति, विदेश सेवा से जुड़ा है, उसके अतिरिक्त इनके पाठ्यक्रम में जो भारत सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं हैं, अपने देश के विकास से संबंधित, अपने देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित, देश इस अमृत काल में किस प्रकार का स्वरूप अगले 25 वर्ष में लेगा, उससे संबंधित, उन सभी में भी इनके पाठ्यक्रम में उनको सम्मिलित किया गया। एक प्रकार से यदि मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ राष्ट्रपति जी, तो अमृत काल में इनका पदभार संभालना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये उस देश के उस कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं, पदभार संभाल रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा उत्कर्ष कालखंड होने वाला है। लेकिन सौभाग्य के साथ साथ इनका दायित्व भी बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत इस कालखंड में जिस प्रकार की प्रगति करेगा, जिस प्रकार के लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करेगा, उसके अनुरूप ही इन अधिकारियों से अपेक्षाएं भी होंगी। इस कारण इनका दायित्व भी उतना ही अधिक होता है। राष्ट्रपति जी, इस दायित्व की पूर्ति के लिए जो मार्गदर्शन आपसे मिलेगा, वो एक मूलभूत रूप से इनका एक सशक्तिकरण करेगा, उनको एक प्रकार से सशक्त बनाएगा हर उस दायित्व के लिए जो कि इस अमृत काल में इनके समक्ष प्रस्तुत होंगे, क्योंकि इनकी पूरी सेवा काल में ये अमृत काल की बेला रहेगी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इन अफसरों ने भेंट की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना मार्गदर्शन इन युवा अधिकारियों को दिया। आज आपके मार्गदर्शन उपरांत ये एक भारत के नेतृत्व की इन अधिकारियों से क्या अपेक्षा है, उस अपेक्षाओं की पूर्ति में किन चीज़ों को मद्देनजर रखना आवश्यक है, वह आपके मार्गदर्शन द्वारा आज संपूर्ण होगा। माननीय राष्ट्रपति जी, अंत में मैं आप द्वारा दिए गए इस मूल्यवान समय के लिए आपका नितांत रूप से धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने अपने बिजी समय में से थोड़ा समय निकाल के इन अफसरों के मार्गदर्शन के लिए भी अपने शब्दों का समय ढूंढा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now invite my fellow officer trainee, Ms. Ramya CS, to share her training experience with all present. A very warm good morning to Honorable President of India, Secretary to the President, Foreign Secretary, Dean SSIFS, esteemed dignitaries, and my fellow officers. I, Ramya CS, on behalf of Indian Foreign Service Officers 2022 batch, express my profound and heartfelt gratitude to Your Excellency for giving us this wonderful opportunity. Madam President, you have been an inspiration for many of us here, and it is a great privilege for us to meet Your Excellency. We began our training along with probationers from other services at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. The common foundation instilled seeds of whole-of-government approach through cross-service collaboration. The motto, Sheelam Param Bhushanam, was the basis for not just our academic learning, but also for the village visit, RM 4.0 at Kevadia, and Himalayan treks. The commitments we made in the time capsules inaugurated by Her Excellency will remain our driving force during this Kartavya Kal of India and beyond. Our professional training at Sushma Swaraj Institute of Foreign Service had engaging classroom sessions on international relations, India's foreign policy, and other interdisciplinary subjects of technology, economy, tourism, and environment. We gained first-hand experience through simulation exercises of negotiations, multilateral dialogues, crisis management, and public speaking. We had around 20 attachments and field visits like Bharat Darshan, aspirational district attachment, and mission attachment at various embassies of India. These helped us to correlate our classroom trainings in real time while creating memories to cherish forever. As the Honorable External Affairs Minister christened our batch as the G20 batch, we had the lifetime opportunity to be part of the G20 Foreign Ministers meeting in February and now currently working for the G20 Leaders Summit in September. Though our roles have been like the squirrel building the Ram Setu, we gained experiences to carry forward into our budding careers. We were also fortunate to meet and interact with some true stalwarts of various fields during our training. The high point was our interaction with the Honorable Prime Minister, who enhanced our global perspectives and also challenged us to come up with research papers on the 3 T's of technology, trade, and tourism. Your Excellency quoted the lines of a poet, Kuvembu, in your maiden Independence Day Eve speech. Nanu alive, Ninu alive, Namma Yelabugala mele, Maduvadu Maduvadu, Navabharatata lile, which means, I will pass, so will you, but on our bones will arise the great tale of new India. We shall forever hold these lines close to our hearts. We shall be ready to make total sacrifice for our motherland and uplift our fellow citizens. Our training module has transformed us into karma yogis, enabling us to make these words of yours as our clarion call of duty and action. Thank you, Jai Hind. I now request my fellow officer, Mr. Bhavesh Chaudhary, to share his experience. माननीय राष्ट्रपति महोदया के सचिव, विदेश सचिव, डीन SSIFS, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण और भारतीय विदेश सेवा के 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मैं भावेश चौधरी भारतीय विदेश सेवा की ट्रेनिंग के अनुभवों को आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। यदि प्रशिक्षण के सभी अनुभवों को संक्षेप में आपके सामने रखना हो, तो भारतीय, विदेश और सेवा, इन 3 शब्दों के असली मायने समझना और अपनाना, यही ट्रेनिंग प्रोग्राम का सार है। भारतीय, माननीय महोदया, एक भारतीय की पहचान उसके जीवन के संघर्ष, उसके सपने तथा उसकी रोज़मर्रा की परेशानियों को बिना समझे
यदि हम अपने कार्य का निर्वाह करना शुरू कर दें तो यह एक भूल होगी। इसीलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के कई आयामों जैसे विलेज विजिट, भारत दर्शन, आर्मी अटैचमेंट द्वारा हमने इस भारतीयता को नज़दीक से समझने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए विलेज विजिट पर जब हमने एक भारतीय की अभावग्रसित जीवन में भी खुशी महसूस कर पाने की क्षमता को करीब से देखा तो सीखा कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपना 100% दिया जा सकता है। और मन में इन अभावों को दूर करने के एक संकल्प ने जन्म लिया। लेकिन इस संकल्प के साथ एक सवाल उपजा कि हम मीलों दूर विदेश में रहकर इन ज़मीनी समस्याओं का हल कैसे कर पाएंगे। इसी उलझन को सुलझाने और भारतीय विदेश सेवा में विदेश के असली मायने जानने का अवसर हमें SSIFS में प्राप्त हुआ। विदेश नीति पर विभिन्न सेशंस, G20 अटैचमेंट और 7 अलग अलग देशों में मिशन अटैचमेंट के द्वारा हमने सीखा कि विदेश में रहकर अपने कार्य का उचित निर्वहन करने से एक भारतीय के जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। विदेश की आधुनिक तकनीकों का भारत की मूलभूत समस्याओं के निवारण में उपयोग करना, भारत के लघु व्यापारियों को वैश्विक मंच प्रदान करने जैसे कई कार्य विदेश नीति में निहित देश हित को ही आगे बढ़ाते हैं। माननीय महोदया, भारतीय विदेश सेवा एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं भले ही पूरे विश्व में फैली हों, लेकिन उसकी जड़ें इस भारत की मिट्टी में ही पनपती हैं। माननीय महोदया, भारतीय और विदेश, इन शब्दों की समझ केवल एक समझ ही बन के रह जाएगी अगर हम में सेवा भाव ना हो। ट्रेनिंग के दौरान हमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हमारी डेस्क पर पड़ी किसी फाइल को चंद कागज़ों के गट्ठर के रूप में नहीं, बल्कि एक भारतीय के सपने और हमसे जुड़ी उनकी आकांक्षाओं की गठरी के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है भविष्य में हम तो ऊंचे पदों पर पहुंच जाएं, पर करियर की इस दौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि एक आम नागरिक की जिंदगी अभावों का शिकारी बनती रहे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, अब आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि ट्रेनिंग के माध्यम से मिली भारतीय विदेश सेवा की समझ को परिणामों तक ले जाने का सफ़र कैसे तय करना है, इसमें हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जय हिंद। Dear Probationers of Indian Foreign Service, I extend my warm welcome to you at Draupadi Bhavan. It is always a pleasure for me to interact with our youth, filled with positive energy and new ideas. I congratulate you all on joining the Indian Foreign Service. It is a great privilege to represent one's country abroad. However, this privilege requires an equally deep commitment from you to serve the people and the nation with pride, dedication, and humility. I am happy to see that this group of young Indian diplomats represents Indian diversity and also reflects the improving gender balance in the foreign service. This bodes well for the service and our nation. Dear officers, it was good to hear about your rich training experience. You have not only learned how our national interests are linked to the outside world, but have also gained the tools and skills required to shape the global agenda to Indians' benefit. There could not be a better time to be an Indian diplomat. India's role and influence in the international arena is expanding rapidly, both as the driver of global growth and as a strong voice in global governance. Today, the international community is looking towards India for solutions to complex global challenges, to its sustainable growth, climate change, cyber security, dealing with disasters, or combating extremism and terrorism. For young diplomats like you, this presents unprecedented opportunities along with new challenges. Dear young officers,
India's growing profile means that you will not only have to fulfill your traditional duties, but will also have to shoulder new responsibilities for serving our political, economic, and cultural interests. It could be seeking out new technology partnerships, securing markets for Indian goods and services, delivering humanitarian aid, or providing support to our diaspora. You must be versatile and debatable. Stay well informed and learn to play multiple roles. As you prepare to discharge these great responsibilities, I urge you all to keep a few things foremost in your mind. First, the ultimate aim of all your efforts and activities abroad should be fostering growth and development in our own country. You should never lose sight of this aim as you seek out new technology, new markets, new research suppliers, and new strategic partners around the world. Your role and contribution to India's progress and prosperity are as important as that of your colleagues in other branches of the civil service, and you have to work with them hand in hand to attain this larger goal. Second, you must carefully cultivate and promote the important role played by the 33 million strong Indian diaspora around the world. I have seen for myself the energy and commitment of our brothers and sisters of Indian origin abroad. This must be harnessed for the good of our nation and to improve our ties with their countries of residence. Third, always remember that for the Indian national abroad, the Indian missions are their home away from home. Consular services and community outreach must be delivered with sensitivity and a human touch. I would urge you to regularly meet our community members and look after their welfare. They have no one but you to reach out to in times of distress. Vande Bharat Mission, Operation Ganga, and Operation Kaveri, where our diplomats worked hard to repatriate thousands of our nationals abroad to their homes in India, were exemplary efforts. Dear officers, you must also keep up the role being played by India now as a fast responder in humanitarian assistance and in disaster and pandemic relief. All these efforts contribute to the immense goodwill and respect enjoyed today by India in the global arena. Finally, many of you are already involved in the busy calendar of events leading up to India's presidency of the G20. You are getting hands-on experience of organizing such an important mega event. Our G20 presidency is unique since India is using this platform to bring the concerns and priorities of the global south to the forefront. I wish you all the best for a memorable and successful G20 Leaders Summit. Dear young officers, you are members of a very distinguished service, which has brought us many laurels. You will be playing major role in strengthening our bilateral relations and global partnerships. I am sure that you will contribute with dedication and integrity in country's developmental journey. In this journey, always remain empathetic and sensitive to the needs and aspirations of those your service, especially the less privileged. In the end, I extend my best wishes to all of you for your future endeavors. May you keep our tricolor flying high and our
proud tradition alive wherever you serve. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.